हिन आज आम स्टार्ट करवा कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग कौन एवं यार कॉन्सेप्ट और नेचर उपरे आम आज पढ़ा। ठीक अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जदि आम गाइडेंस और काउंसलिंग रो डिफरेंट देखा तेरे तार क्यों क्यों आस्पेक्ट को आम देखिकी तार क्यों क्यों क्राइटेरिया को देखिकी आम डिफरेंस करवा। हाउ टू डिफरेंट guidance and counseling and what are the principle to differ guidance from the counseling. Both guidance and counseling is problem solving process because both guidance and counseling are process used to solve problems of life. आम जीवन में प्रति क्षेत्र में गाइडेंस और काउंसलिंग आवश्यकता अच्छी कारण आम जिते बड़े प्रॉब्लम को फेस करती से बड़ धरण प्रॉब्लम हो किंबा छोट धरण प्रॉब्लम हो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने आम बेले बेले गाइडेंस साहाय्य होता जिते बड़े प्रॉब्लम टी साइकोलॉजिकली एवं बिहेवियरली अफेक्टेड होता है सेते बड़े आम काउंसलिंग आवश्यकता नहीं था। द बेसिक डिफरेंस is in the approach. In the process of guidance, the client's problem are listened carefully and ready-made solutions are provided by the expert. Basic difference in the approach जब हमें कहवा गोटे हूँ प्रॉब्लम ओरिएंटेड गोटे हूँ हेल्पिंग नेचर ओरिएंटेड एडवाइस ओरिएंटेड गाइडेंस सब एडवाइस हेल्पिंग नेचर ओरिएंटेड होता है किंतु काउंसलिंग कौन करे काउंसलिंग कौन करे प्रॉब्लम को केयरफुली सुने एवं क्लाइंटर प्रॉब्लम को जज करे एवं तार सॉल्यूशन अनुसार एक्सपर्टाइज अनुसार तार सॉल्यूशन को प्रदान करता है। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एवं काउंसलिंग मध्य गाइडेंस आसी जाए नुहे कि जे गाइडेंस भितर काउंसलिंग आसी जाए कारण गाइडेंस हूँ बिग टर्म ता भीतर आमर काउंसलिंग हूँ भेरी स्पेसिफिक जहाँ एक्सपर्ट मान द्वारा दि जाए। व्हेयर as in the process of counseling the client's problem are discussed and relevant information are provided in between. In the end of counseling process the client himself and herself have an insight to the problem and he or she become empowered to take own decision. जदि हम देखा सेठी रेडीमेड सॉल्यूशन दिया होता क्योंटी गाइडेंस रे किंतु जदि आम काउंसलिंग प्रोसेस को देखा तो काउंसलिंग प्रोसेस से कौन करा होची काउंसलिंग प्रोसेस से कौन करा होची ना एठी केतेक प्रोसेस को फॉलो करा होची जेमिति हम प्रथम देखिले क्लाइंट रो प्रॉब्लम को डिस्कस करिबा रिलेवेंट इनफॉरमेशन को जोगाड़ करिबा अर्थात आमे काउंसलिंग रो समस्त प्रतिटी फेज रो इनफॉरमेशन को एनालिसिस करिबा देन इनसाइट डेवलपमेंट करिया का भितरे विदिन द clients and clients become the empowered and able to take the decision in own ability. So the counseling process is types of behavioral changes and realization of his and her powers to problem solve in own ability. Okay, next meaning of counseling. Counseling रो माने को हम देखिबा सिंपल हम देखिबा counseling is a method of guidance. Counseling is a method of guidance of an individual. It helps the client to grow to a greater maturity by allowing the individuals to take responsibilities and to make their own decisions. Counseling is a process provide the energy and realization of his abilities to take the decision in own way. It is a nothing, it is a simple and process of a counselor to realize the problem of clients and make some area of a remedial solution to the clients and clients realize his problem and take the decision about his problem as well as possible to solve the problem.
ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग काउंसलिंग इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल से पीपल किए किए गोटे हूँ काउंसिलर गोटे हूँ क्लाइंट सी सी मध्य गोटे हूँ काउंसिलर गोटे हूँ क्लाइंट भितर गोटे रिलेशनशिप बिल्डिंग हुए काउंसलिंग इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल व्हेयर one person attempts to assist the other to organize himself better to attain in form of happiness by adjusting to the situation कौन से को सिचुएसन प्रॉब्लम को नहीं जो क्लाइंट आसी था काउंसिलर पाखक से काउंसिलर कौन करता है आसिस्ट करता है एवं जाफल से सिचुएसन को खाप खोला भली एबिलिटी क्लाइंट मध्य डेभलप करता है ठीक अच्छे The relationship between the counselor and the clients helps to openly discuss the problem faced by the clients. This helps to increase the skill. कौन increase करे गोटे हूँ स्किल की increase करे courage and self confidence in the client and creates a new behavior in the client. कही सारी ये साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर को स्ट्रेंथ करे गोटे हूँ साइकोलॉजिकल गोटे हूँ बिहेवियर को स्ट्रेंथ करे देन द क्लाइंट्स एबल टू सॉल्व हिज एंड हर प्रॉब्लम्स इन यूज ऑफ हिज पावर एंड काउंसिलर जस्ट असिस्ट हेल्प इन द सिस्टमेटिक मैनर after the collection of all problem and all situation of the client analyzing and advise some specific areas आम कही पार तार प्रॉब्लम ही पाठ पढ़ा तो एजुकेशनल कैरियर काउंसलिंग दबा किंतु गाइडेंस इज असिस्ट बट काउंसलिंग इज असिस्ट प्रोसेस बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस असिस्टिंग काउंसलिंग असिस्टिंग इज वेरी बिग बिकॉज guidance without any collection of information just hearing this problem of the client then gives the advice but counseling process the counselor carefully listen analyze synthesis diagnosis all the process completion then he able to advise he means counselor or she means counselor able to advise to his and her clients तार clients को किसी मत देवाई सी होता है एबल केतबेले जितेबले सी प्रॉब्लम को बुझी थाए एनालाइज करता है ठीक अच्छे ओके तापर देखिबा न्यू मेथड्स आर एक्सप्लोर टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन फॉर द perceived problem faced by the clients क्लाइंट कहीं प्रॉब्लम फेस करुचे तार प्रिसिप्ट प्रॉब्लम कहीं से फेस करुचे तार सॉल्यूशन मेथड एक्सप्लोर करवा हूँ काउंसिलर काम से कथा कहूँ समटाइम्स द क्लाइंट्स मे नॉट फाइंड ए सिचुएशन और सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्लाइंट नॉट फाइंड द सॉल्यूशन बट they although offering able to share the problem with the another person itself can give a satisfaction to the clients जितेबले क्लाइंट काउंसिलर पाखर कौन करता है प्रॉब्लम को कही था निज को साटिस्फाई मिलता है अधा प्रॉब्लम से सॉल्व होता है एवं काउंसिलर कौन करे तार प्रॉब्लम को आउ टे कौन करे ना हल्का करिकी हल्का मीन्स देखो रिलैक्स करिकी तार सॉल्यूशन मात्रा बढ़ाई थाए मुझे कहीपरि मनकर जड़े पाठपढ़ा डिप्रेशन आड़ को जाइए कैरियर काउंसलिंग पाखक जीव तार कैरियर रे कौन कौन सब अपॉर्चुनिटी अच्छे इनफॉरमेशन मिल से खुशी हो अच्छा मो कैरियर रे एते सारा अपॉर्चुनिटी अच्छी तो मुझे एत कौन डिप्रेशन नेबी यही प्रॉब्लम सॉल्व हो गला ये जिते बिग बिग सिचुएशन आसे अर्थात लार्ज एंड क्रिटिकल सिचुएशन आसे तो क्लाइंट कौन करे आगे प्रथम रिलैक्स करे ता विषय जी इनफॉरमेशन अच्छी से विषय रिलैक्स होगापाई जगाई था काउंसलिंग ऑल्सो हेल्प टू डेवलप ए सेट ऑफ गोल्स फॉर फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और क्लाइंट काउंसिलर कौन करे हेल्प करे कौन ना तार गोल को डेवलप करने एवं
फ्यूचर बिहेवियर किपरि भाव से गोल डिसाइड करता ए काउंसलिंग प्रोसेस रे फॉर्मेशन होता है किपरि आम उदाहरण देवा गोटे एग्जाम्पल माध्यम बुझा मन कर जड़े पाठपढ़ा को लेकिन कि कौन सी गोटे गोल अचीव कर पारानी डिप्रेशन को पलैला स्ट्रेसफुल होगा तो कौन कर क्लाइंट पाखक जाऊँ क्लाइंट कौन कर गोल विषय आवार करुच्छ सेट एटा गोल कर अचीव कर पारानी पुणी एमती पढ़ा पड़ो टीचर इज नॉट ए काउंसलर बिकॉज टीचर समटाइम्स ए पार्ट ऑफ काउंसलर बिकॉज टीचर समटाइम्स collection of the systematic data through the analytical record and portfolio and gives advice and motivation towards his and her students as a part of the counseling, but it is not a systematic counseling process. Okay, next, nature of counseling. Counseling रो किछि nature आज पढ़िबा. Helps sometimes understand his problem and concern from a psychological स्टैंड पॉइंट कही सारी कारण इट हेल्प समटाइम्स अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स समस्यार बुझापणा करवा एवं ता सहित मनस्तात्विक को एक उन्नत धरण उन्नति कर साहाय्य करने को आम काउंसलिंग प्रोसेस करवा मनस्तात्विक को जाना एवं तार उन्नति केमिस्ट्री रिलैक्स हाउ टू माइंड एंड साइकोलॉजी रिलैक्स यहाँ काउंसलिंग गोटे प्रोसेस process thoughts and feelings from the past experiences that impacts the present किपर तार थॉट प्रोसेस चलछि तार फीलिंग्स कोन आगुर थिला पास्ट रे एवं यह किपर भाव में प्रेजेंट रे इंपैक्ट होछि ताको मध्य एनालिसिस करिथाय शेषरे हम देखिबा अंडरस्टैंड हाउ लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इंपैक्ट करेंट फंक्शनिंग ठीक अछि किपरि भाव में एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रेस आम भितर कौन अच्छे से केमी इंपैक्ट पकाउछि आमर करेन्ट फंक्शन को प्रेजेंट कि इंपैक्ट ताकू बुझा काउंसलिंग मुख्यतः आम तीन प्रोसेस विषय डिस्कस कले फास्ट जो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंड हाउ लाइफ कंटेंट एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इंपैक्ट करेंट फंक्शन ओके नेक्स्ट connect with their personal strengths and intuition means तार किसी ट्रेड किसी आम कही परिबा तार गोटे क्वालिटी इंट्यूशन कौन कौन तार स्ट्रेंथ आउ वीकनेस आम जो कहते स्ट्रेंथ आउ वीकनेस कनेक्ट विथ देयर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड इंट्यूशन मीन्स वीकनेस तार कौटी रही गलती से आम कौन करवा कनेक्टिविटी करवा डेभलप ए प्लान हेलिंग एंड चेंज आम कौन करवा प्लान माध्यम चेंज करवा ठीक अच्छे असिस्ट विथ डेभलपिंग मोर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कॉपिंग एंड मैनेजिंग लाइफ ऑन ए डेली बेसिस आम असिस्ट करवा कौन असिस्ट विथ डेवलपमेंट मोर इफेक्टिव मेथड इफेक्टिव माध्यम कौन मैनेज करा डे टू डे लाइफ में मैनेज करा सीखा हेल्प समवन लर्न टू यूज इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट रिटर्न्स टू अनहेल्दी बिहेवियर और इनइफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रैटेजी कौन कौन यही पॉइंट रे हेल्प समवन लर्न टू यूजफुल इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट रिटर्निंग अनहेल्दी बिहेवियर और इनइफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रैटेजी आम एमती एक स्ट्रैटेजी डेभलप करा एमती एक बिहेवियर डेभलपमेंट करवा जिते से अनहेल्दी बिहेवियर रिटर्न आसपार प्रिवेंटिव नहीं पार समस्यार समाधान कर क्लियर नेक्स्ट व्हेन काउंसलिंग इज सक्सेसफुल ए पर्सन शुड फील बेटर एबल टू फेस लाइफ चैलेंजेस यूजिंग मोर हेल्दी एंड इफेक्टिव कॉपिंग मेकानिज्म कौन करे ना जिते बेले आम कहवा गोटे काउंसिलर काउंसलिंग प्रोसेस सक्सेस कला सेते बेले ता निज क्लाइंट भितर कौन कौन आसता है ना ता जीवन को लेकिन चैलेंजेस को फेस कर क्षमता आसता है हेल्दी और इफेक्टिव प्रोसेस ता मध्य जेनरेट होता है काउंसलिंग इज ए कोलाबोरेटिव प्रोसेस कोलाबोरेटिव बिटवीन क्लाइंट
काउंसिलर, पेरेंट्स, peers, environment, situation, experiences या मध्य कौन होता है ना भितर कोलाबोरेशन होता है. विदाउट कोलाबोरेशन प्रोसेस द काउंसिलर नॉट एबल टू परफेक्टली मैनेज द काउंसलिंग प्रोसेस. ओके. Effective counseling is conducted with the continuing input from the client. प्रतिदिन क्लाइंट पाखरु क्लाइंट रे आम इनपुट देवा क्लाइंट पाखरु किछि जानिबा. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. once we evaluate presenting problems, we work with the client and prioritize individual needs and outline strategy to meet the goals. Simple. Effective counseling is conducted with a continuing manner and evaluate presenting problems of the clients and do the work on the basis of a need and interest, prioritize or customize interest of the clients, make the strategy to meet the goal and solve the problems of client. Okay. Next, टाइप ऑफ काउंसलिंग. जदि आम टाइप ऑफ काउंसलिंग पढ़ा तेज तीन प्रकार काउंसलिंग आम देखा. कौन कौन तीन प्रकार काउंसलिंग? गोटे हूँ डायरेक्टिव काउंसलिंग आम कौन कह प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग. कौन कह प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आम कौन कह प्रिमिसिव काउंसलिंग एंड आउटे कह इलेक्ट्रिक काउंसलिंग. ठीक अच्छे. तीन प्रकार काउंसलिंग. डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आउट हूँ इलेक्ट्रिक काउंसलिंग. ठीक अच्छे. यह कौन, यार गुरुत्व कौन, ये क्यों क्यों गुरुत्व बन करे ताकू आम देखा. फास्ट, डायरेक्टिव काउंसलिंग और प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्टिव एंड डायरेक्टिव काउंसलिंग? यार फाउंडर किए? इजी विलियमसन is the chief exponent in this counseling process and this point of view. Counselor centered counseling process madhya kuha jaye. Directive counseling also known as the prescriptive counseling because the prescribed by the counselor and also called counselor centered process or counselor centered counseling process because the counselor direct the clients to take steps into order to resolve his conflicts because it client decision नहीं था. client decision नवा बदल रे काउंसिलर डिसीजन नहीं था. सिंपल. ये काउंसिलर डिसीजन नहीं था सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे. इट इज बेस्ड ऑन द assumption that the client cannot solve his own problem for lack of information because client is not expert. Client is not experienced of this problem because this problem is come in his first time. Client is not understand what this problem in my life and how my psychology and behavior changed immediately, so that the counselor take the solving problem process and try to solve the process because counselor is more experiences, expertise and आम कहीपर गोटे लार्ज इनफॉरमेशन थिबा पर्सन. ओके. नेक्स्ट देखिबा द काउंसिलर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल. ही ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ काउंटलेस बाय द इन्फॉर्मिंग अर्थात which means the counselor plays an important role because it is a counselor sector. He tries to direct the thinking of a counsel. Counsel means client by informing. Information द्वारा क्लाइंट रो सीधा सड़क थिंकिंग को टार्गेट करे काउंसलर. टार्गेट करके तार प्रॉब्लम कौन करे जानिबा को चाहे. एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रिटिंग एंड एडवाइजिंग देता है. It gives more importance to intellectual aspect
Then emotional aspect is a very important point, because directive counseling, it gives more importance to intellectual aspect than emotional aspect. इमोशनल आस्पेक्ट ठारू ए इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट अधिक होता है। कारण गोटे उदाहरण ना यही पॉइंट को बुझापी, मनकर मु काउंसिलर मो पाक जो क्लाइंट आसी तार इनफर्मेसन गुरुत्व दूसरी, तार इमोशन को गुरुत्व दूना, से कहीं एमती प्रोब्लेम फेस करा, स्टडी एमती कौन प्रोब्लेम है, तार कौन सिचुएसन होता घरे, से कहीं एग्जाम दे पारानी, कहीं डिप्रेशन आस, तार इमोशन को ये कौन होता है ना, जब आम कह सिंपल भाव में डायरेक्ट काउंसलिंग रे काउंसिलर एते एम्पाथेटिक नेचर हो न था, से जस्ट कलेक्ट द इनफॉरमेशन, नॉट एबल टू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द क्लाइंट, बिकॉज ही फोकस द इंटेलेक्चुअल इनफॉरमेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड द एडवाइस एंड मीट द गोल ऑफ द क्लाइंट्स। फीचर ऑफ अ डायरेक्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव और काउंसिलर सेंटर्ड प्रोसेस तो देखा। फास्ट हम देखा कौन कही, ड्यूरिंग द इंटरव्यू अटेंशन इज फोकस्ड ऑफ ऑन एन पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स सॉल्यूशन प्रॉब्लम पर गुरुत्व दिए, फास्ट कथा। सेकेंड, ड्यूरिंग द इंटरव्यू मान कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम द क्लाइंट्स, सही समय जो क्लाइंट आउ काउंसिलर डिस्कस होता है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू द काउंसिलर प्लेस ए मोर एक्टिव रोल देन क्लाइंट को सेंटर रखा जाए नहीं, ये सेंटर किए रहे काउंसिलर मोर एक्टिव रहे क्लाइंट ठारू, क्लाइंट मे बी पैसिव हो पारे। थर्ड, द क्लाइंट मेक्स ए डिसीजन बट द काउंसिलर डज all that he can to get the counsel make a decision in keeping with his diagnosis। अर्थात कौन कौन से the client makes a decision, जिते बड़े क्लाइंट किसी डिसीजन नवा को ट्राए करू से कौन कर, बट द काउंसिलर कौन कर डज ऑल दैट ही कैन टू गेट द काउंसिल कौन कर अपोज नुहे आम कह अपोज करुच एंड मेक ए डिसीजन, एवं काउंसिलर डिसीजन हो, कारण से जानी क्लाइंट कौन एत एबुल नुहे। डायरेक्ट काउंसलिंग जो हो काउंसिलर तार एक्सपीरियंस को कौन कर जगह लगाऊँ एवं डिसीजन इन कीपिंग विथ हिज डायग्नोसिस, तार प्रॉब्लम को देखिए कौन कर डिसीजन को तैयारी किए ना काउंसिलर। The counselor tries to direct the thinking of the counsel by informing, explaining, interpreting and advising। एटा बुझे सारी कारण से इंपोर्टेंट कथा को लिखाई, कारण जो काउंसिलर ट्राइज टू डायरेक्ट थिंकिंग ऑफ काउंसिल क्लाइंट रो इनफॉरमेशन एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन को बुझे आउ तार थिंकिंग को कौन कर बुझिकी तार डायरेक्ट ताकू सॉल्यूशन दब। स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग हम देखिए बर्तमान कौन कौन स्टेप दे गति करी थाए जने काउंसिलर। फर्स्ट, विलियमसन हैज गिवन 6 स्टेप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। फर्स्ट, एनालिसिस, जने क्लाइंट आसी क्या पाखक ना काउंसिलर पाखक। फर्स्ट ये हूँ काउंसिलर, ठीक अच्छे, ये हूँ काउंसिलर, ये हूँ क्लाइंट, ठीक अच्छे, ये हूँ क्लाइंट, ये हूँ क्लाइंट, ये हूँ काउंसिलर। एनालिसिस, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स। एटा आम क्लासरूम सिचुएशन को नहीं आसे एग्जाम्पल माध्यम बुझापी जहाँ भल हम जिते बड़े गोटे स्टूडेंट टीचर पाखक जाए काउंसलिंग, सपोज काउंसलिंग आम कौन करवा कलेक्टिंग डाटा फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स को क्लाइंट को बुझाई डाटा कलेक्शन करवा। तापर कौन करवा सिंथेसिस मीन ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द डाटा मीन्स क्लाइंट सिचुएशन एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इमोशन को आम बुझा। इमोशन तो ये डायरेक्ट काउंसिल बुझी होता है, तार सब आस्पेक्ट आम कौन करें डाटा कलेक्शन करवा, डाटा को ऑर्गेनाइज करवा, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द डाटा। डायग्नोसिस मीन्स फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन अबाउट द प्रॉब्लम, गोटे प्रॉब्लम
डाटा कलेक्शन कले डाटा ऑर्गेनाइज कले एबे कौन है ना प्रॉब्लम ऊपर आम गोटे कंक्लूजन व समराइजिंग फॉर्मेशन करवा सिंपल प्रोग्नोसिस मीन्स कौन ना प्रेडिक्टिंग फ्यूचर मीन्स प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स और क्लाइंट एमिति कले एमिति सिचुएशन हो पारे एमिति हेइथिबो दी एमिति सिचुएशन हेइथिबो तो हो पारे तो एमिति कौन करे प्रेडिक्शन करिवो देन काउंसलिंग करिवो टेकिंग स्टेप with the students cooperations to bring about the adjustment in him अर्थात जो क्लाइंट को एबे काउंसलिंग करा जिवो काउंसलिंग रो डिसीजन लिया जिवो with the cooperation of clients एक्सपीरियंसेस क्लाइंट सिचुएशन को आम बुझा तार सहयोग करवा सहयोगिता समस्त काउंसलिंग प्रोवाइड करवा लास्ट को आम देखा काउंसलिंग रो केते इफेक्टिवनेस it is evaluation process follow up it is evaluation process because helping and determining the effectiveness of counseling providing to the students or clients ठीक अच्छे नेक्स्ट एडवांटेजेस कौन रही डायरेक्टिव काउंसलिंग रे सिंपल देखा कौन कौन एडवांटेजेस रही आमर डायरेक्टिव प्रेस्क्रिप्टिव काउंसिलर सेंटर्ड काउंसलिंग रे फास्ट एडवांटेजेस इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग कारण ये काउंसलिंग डिसीजन नहीं काउंसिलर डिसीजन नहीं था सिंपल कथा हेंस दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड व्हेन एन अर्ली सिचुएशन इज रिक्वायर्ड जिते बड़े अर्ली सिचुएशन आसता है से कौन करता है ना काउंसिलर जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है एटा क्लाइंट आ काउंसिलर मध्य काउंसिलर कौन करते हैं ना तार सेंटर रखी तार एक्सपीरियंस रखी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे सिंपल दिस मेथड इज बेस्ट लेस मैच्योर्ड एंड लेस इंटेलिजेंट क्लाइंट जिते बड़े लेस मैच्योर्ड आम होता जो क्लाइंट छोट छुआ गोटे आसताकू ये गभीरतम प्रदेश को आम पचार ना आम जस्ट सॉल्व करदा प्रॉब्लम को दिस मेथड इज बेस्ट जिते बड़े व्हेन द क्लाइंट इज लेस मैच्योर्ड एंड लेस इंटेलेक्ट क्लाइंट interact with his experiences and counselor make the decision and meet the objective of a counseling process okay third goes this is the best method at lower levels where the client is not in a position to analyze in his own problem जते बेले काउंसिलर एबल हो पारे ना काउंसिलर ताको एनालाइज करि पारन तार ओन प्रॉब्लम कौन होता केमी सिचुएशन थिला कहीं के लिए सेते बेले ए प्रॉब्लम रो आमे संगे संगे सॉल्व कर पारिबा टू अडॉप्ट डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड ओके इन दिस मेथड द काउंसिलर बिकम्स readily means it is a very means limitation available to help the clients which makes the client very happy because ये काउंसिलर कौन करता है ना रिडिडली मीन्स तार सब किसी इनफॉरमेशन को स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल करता है एवं क्लाइंट को कौन करता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सिंपल कथा फास्ट कौन करे इट इज ए लेस टाइम कंज्यूमिंग सेकेंड इट इज ए बेस्ट मेथड बिकॉज when the counselor and when the client is unmatured or less matured and less intellect client okay ये कौन करता है ना इट इज ए बेस्ट मेथड लोअर लेवल जैसे क्लाइंट कौन करता है आर प्रॉब्लम आरंभ होता है एवं क्लाइंट निजर प्रॉब्लम को एनालाइज करें से गोटे बेस्ट मेथड हो पाए आउटे कौन होता है ना क्लाइंट ये कौन होता है ना काउंसिलर कौन बिकम होता है अर्थात बदली जाता है केमी ना रिटेलली अर्थात सब किसी इनफॉरमेशन ताकत थाए और तेणु से कौन करे ना क्लाइंट प्रॉब्लम को अति जल्दी सॉल्व कर पारे सिंपल डिसएडवांटेजेस कौन देखा आम इन डायरेक्टिव काउंसलिंग द क्लाइंट नेवर बिकम ए इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसलर सो इट इज नॉट एन इफेक्टिव और बेस्ट गाइडेंस बुझला सिंपल कारण एटा काउंसिलर सेंटर्ड मेथड तेणु क्लाइंट को ये सुजोग मिलता फ्रीडम को एक्सरसाइज करने तार इमोशन को प्रेजेंट करने जदि इमोशन से प्रेजेंट कर काउंसिलर शुणापी से धैर्य नथिबो अर्थात हम कह डायरेक्ट काउंसलिंग काउंसिलर एत पेसेंसफुल नुहे से कौन डायरेक्ट डिसीजन नहीं जाए सिंपल सेकेंड हम कौन देखुं सेकेंड देखुं
the personal autonomy and integrity of the client is not respected. क्लाइंटर इंटीग्रिटी को ये खनन करा जाए अर्थात ये ऑटोनॉमी दिया जाए नहीं कारण ये काउंसिलर डील करे प्रॉब्लम को नुहे कि एबल कराए क्लाइंट को से तार प्रॉब्लम को सॉल्व करने इट लीड्स टू न्यू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ये बेले बेले आउ गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करें सुविधा हो जाए इट विल नॉट हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप एनी एटीट्यूड थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस यह कौन करे ना क्लाइंट को एबल करे नाई गोटे एक्सपीरियंस को गेन करने जहाँफल से तार निज प्रॉब्लम को सॉल्व करे ये जस्ट अंडरस्टैंड करे क्लाइंट सिचुएशन देन गो फॉरवर्ड डायरेक्टली रिमेडीज किसी से बुझे ना अर्थात एटा एते ऑटोनॉमी दिए ना क्लाइंट को द काउंसिलर फेल्स इन सेविंग द क्लाइंट्स टू commit the mistake in future एटी काउंसिलर फेल इन सेविंग द क्लाइंट्स टू कमिट द मिस्टेक इन फ्यूचर एटी कौन करें ना ना क्लाइंट को कही पारे ना एमती प्रॉब्लम आके आसे ना आसब ना एमती काउंसिलर कौन करता ना फेल्यूर हो जाए क्लाइंट को कमिटमेंट करने ओके रोल ऑफ काउंसिलर इन डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस और काउंसिलर सेंटर्ड काउंसलिंग प्रोसेस he or she has the major role in this process okay he or she is the leader of the situation कही सारी ये लीडर था काउंसिलर she does not most of the task से वैसे टास्क दिए ना टास्क ओरिएंटेड है नहीं खाली इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड नॉट इमोशनल ओरिएंटेड प्रॉब्लम एंड नॉट इंडिविजुअल इन द फोकस प्रॉब्लम फोकस थाए इंडिविजुअल फोकस न थाए ही डायरेक्ट्स द थिंकिंग से थिंकिंग ऊपर काम करे नॉट इमोशन ऊपर काम करे अंडरस्टैंडिंग ऊपर काम करे ना ही यूज डायरेक्ट एक्सप्लानेटरी एंड प्रिम्यूसिव मेथड्स डायरेक्ट कौन करे एक्सप्लेनेशन दे दिए प्रेस्क्राइब कर दिए डॉक्टर को गला डॉक्टर लिखी दिए सागे सागे ओके सेमती भाव में प्रेस्क्राइब कर दिए नॉट डेस्क्राइब करे ना कौन विषय को बा एटा हूँ कौन प्रिम्यूसिव इन नेचर होता है डायरेक्ट मेथड होता है ट्राइज टू हेल्प द काउंसिल इन सॉल्विंग हिज इंटेलेक्चुअल एंड नॉट इमोशनल प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम को बुझिक सॉल्व कर दे ना इमोशनल को पहुँची पारे ना सिंपल कथा एबे देखिवा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग व्हाट आर द प्रोसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एगो कौन कह जाए यार फादर किए यार एक्सपोनेंट किए यार प्रोपोनेंट किए देखिबा कार्ल रोजर आम कही था ठीक अच्छे सीआर रोजर इज द चीफ एक्सपोनेंट इन दिस व्यू पॉइंट ओके दिस स्कूल ऑफ थॉट इज जस्ट सर्व्स टू दैट ऑफ द डायरेक्टिव काउंसलिंग ये डायरेक्टिव रो रिवर्स रे आस्ता है यह डायरेक्टिव रो अपोजिशन आस्ता है यहाँ हूँ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस ये एमती एक स्कूल ऑफ थॉट जहाँ कौन करे ना डायरेक्टिव काउंसलिंग रो रिवर्स रे आस्ता है ठीक अच्छे इट इज ए क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस इट इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज इट इज ए क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस इन दिस द काउंसिल आम कही पारिबा काउंसिल अर्थात क्लाइंट इज द पिवट मीन्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लाइंट को क्लाइंट सब कथा बुझा अर्थात क्लाइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द होल काउंसलिंग प्रोसेस द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू क्रिएट ए एटमॉस्फियर इट मीन्स काउंसिलर आम कह काउंसिलर आ काउंसिलर भितर कौन होता है ना गोटे आटमोस्फियर होता है क्लाइंट मध्य काउंसिलर मध्य आटमोस्फियर एमती क्रिएट कराई इन व्हिच द क्लाइंट कैन वर्क आउट हिज प्रॉब्लम तार निज निजर प्रॉब्लम कौन करिवो ना वर्क आउट करिवो बा काढ़ीदेव तार प्रॉब्लम कौन अच्छी इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिमिसिव काउंसलिंग बिकॉज इट बहुत इंपोर्टेंट देता है गभीर को जाता है दिस इज ए प्रिमिसिव डिटेल्स काउंसलिंग प्रोसेस इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इमोशनल एलिमेंट rather than intellectual elements are stressed अर्थात ये इमोशनल को अधिक स्ट्रेस दिया जाए फोकस दिया जाए इंपोर्टेंट दिया जाए rather than the intellectual elements okay
नेक्स्ट स्टेप इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. स्टेप इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. कार्ल रोजर has given the following step of this non directive counseling. कौन सब प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पे स्टेप अच्छी. फास्ट डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. प्रथमे क्लाइंट रो प्रॉब्लम कौन अच्छी किंतु डायरेक्टिव काउंसलिंग कौन होता ना प्रथमे कौन है एनालिसिस तापर सिंथेसिस तापर डायग्नोसिस तापर प्रोग्नोसिस तापर आम कह काउंसलिंग तापर फॉलोअप. एठी कौन कौच ना डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. फास्ट ऑफ ऑल द काउंसलर शुड डिफाइन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. ए प्रॉब्लम कहीं है एगो डिफाइन प्रथम करें. ठीक अच्छे डिफाइन कले काउंसलर कौन करता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को पकईकि क्लाइंट पाखु समस्त प्रॉब्लम कौन करता है ना गेन करता है. ओके सेकेंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पड़े आसला. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मीन्स कहीं किपर है एमती भाव में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या पकेब क्लाइंट को पके. क्लाइंट से गोटे एक्सप्रेस कला बेले एमती आटमोस्फियर काउंसलर बन एत फ्रेंडली हो क्लाइंट सबू प्रॉब्लम को कौन कर ना क्लाइंट विदाउट एनी हेजिटेशन काउंसलर पाखे एक्सप्रेस करदेव. विदाउट एनी हेजिटेशन द क्लाइंट एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर प्रॉब्लम्स एमंग द काउंसलर. बिकॉज बिफोर द counseling process the counselor create a most best and autonomy of atmosphere for the client. Okay free expression of the feelings कौन करा जाइबो ना क्लाइंट को कहा जाइबो फ्री एक्सप्रेशन फीलिंग्स दिया जाइबो ताको फ्री एनवायरनमेंट दिया जाइबो. आफ्टर द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट इज मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट and he can express or she can express his and her feelings freely and the counselor approves this. एवं यह कौन कर ना काउंसलर ग्रहण कर से जहाँ कहूँ ताको काउंसलर ग्रहण कर क्लाइंटर कथा. ओके फास्ट हूँ डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देन प्रोवाइड द फ्रीडम और ऑटोनॉमी टू एक्सप्रेस हिज फैक्ट्स एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस. क्लियर. देन डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट क्या मध्य इनसाइट डेवलपमेंट कराया कथा से कहूँ. द काउंसलर गोज ऑन द थिंकिंग regarding the client's new feelings along with the development of a client's insight and he go on the classifying all those new feelings. आमे कौन करिबा ना क्लाइंट जी अच्छा एटा कौन ना क्लाइंट भीतर आम इनसाइट डेवलपमेंट करवा कारण आमर मुख्य पर्पज हूँ क्लाइंट को एबल करवा क्लाइंट ता प्रॉब्लम से सॉल्व करिवो. एठी काउंसलर जस्ट ए फैसिलिटेटर लाइक जाम्बवान जिते बड़े हनुमानकर कौन है ना आम जान रामायण विषय देखा हनुमान शक्ति पड़े जाम्बवान कौन मन पकई काउंसलर हो मन पकई एमती नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग इज इन सच टाइप ऑफ प्रोसेस. द काउंसलर प्लेज ए लाइक जाम्बवान एंड क्लाइंट इन दिस सिचुएशन लाइक हनुमान. सो दैट एटी कौन कराला ना क्लाइंट भीतर इनसाइट डेवलपमेंट कराला तार न्यू फीलिंग्स सब कौन अच्छी ताको कौन कराला जज कराला लिस्ट कराला और से न्यू फीलिंग्स अनुसार सपोज मोटे कथा कहूँ जनकर मनकर एक्सीडेंट होती से एक्सीडेंट को लेकिन बहुत सारा किसी अलग दृश्य देखी जहाँ जीवन की देखी ना तार न्यू फीलिंग्स से न्यू फीलिंग्स को लेकिन आम कौन लिस्ट करवा एवं ए न्यू फीलिंग्स को से कि संभाली पारि ताको मोटिवेट करवा. हाँ तुम से एबल थी बोल तुम ये सस्टेन कर पाइल. यू आर दी ए ग्रेट पर्सन यू आर दी एबल पर्सन टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. तार न्यू फीलिंग्स को कैप्चर करवा एवं से न्यू फीलिंग्स को कैप्चर करके आम कौन करवा ताको मोटिवेट करवा ताको इनसाइट डेवलपमेंट करवा ताको कौन करवा टिके एनर्जेटिक करवा जहाँफल सी मोटिवेट हम डिमोटिवेट हम ना. फास्ट कथा डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट प्रथम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देले तापर ऑटोनॉमी दे तार एक्सपीरियंस शेयर कला तार न्यू एक्सपीरियंस शेयर करा तार फीलिंग्स आम काउंटर कर लिस्ट कला बेले आम कौन कर देखो ना तार समस्त इनसाइट को डेवलपमेंट करार लगिले. तापर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स. अच्छा एक्सीडेंट तो होता
तार नेगेटिव फिलिंग्स पॉजिटिव फिलिंग्स आम अलग अलग करदे। फास्ट नेगेटिव जिनस को आम स्टॉप करवा, पॉजिटिव जिनस को आम आबार करवा। ठीक अच्छे यही प्रोब्लेम एमती तुम आसीच तो ये तुम गोटे बड़ क्वालिटी एमती भाव आम डेभलप करवा। बिकज मोटिवेशन इज increasing the behavior and punishment is the decreasing the behavior, or negative things is decreasing our behavior. After the free expression of feelings by the client, the counselor identifies his negative and positive feelings of his classifies them. तापर कौन करा डिटर्मिनेशन ऑफ अ काउंसलिंग सिचुएशन। एबे दबा आम काउंसलिंग ओके टर्मिनेशन आम आसो एबे कौन डिटरमाइन करवा केमी आम काउंसलिंग दबा। एबे आसो टर्मिनेशन ऑफ अ काउंसलिंग सिचुएशन। द काउंसलर लुक्स फॉर ए पॉइंट व्हेयर ही कैन टर्मिनेट द काउंसलिंग सिचुएशन। देन टर्मिनेशन ऑफ अ काउंसलिंग सिचुएशन। द काउंसलर लुक्स फॉर ए पॉइंट व्हेयर ही कैन टर्मिनेट। अर्थात एठी कौन करिवो ना काउंसलर देखिवो कि क्लाइंट रो समस्त इनफॉरमेशन जो दिया जाउची सेतले कौन करिवो एई जगह रे मते क्लाइंट को मोटिवेट करियार अछि। एइडी मते टर्मिनेशन नबार अछि, एई जगह मते टर्मिनेशन नबार अछि। एई जगह टर्मिनेशन नेले क्लाइंट मोटिवेट हबो, एई जगह टर्मिनेशन नेले क्लाइंट मोटिवेशन हबो। एई जगह रे मुझे जदि किछि कहूची एडी एनर्जेटिक हबो तो ये टर्मिनेशन और काउंसलिंग ये कौन करियो ना जस्ट रियलाइजेशन ऑफ हिज क्लाइंट्स पावर। ओके आफ्टर ऑल दी एबव स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट आइदर द क्लाइंट और काउंसलर कैन सजेस्ट फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ अ काउंसलिंग सिचुएशन। एठी बोथ काउंसलर आ क्लाइंट रियलाइज करिए हाँ मोर एटा स्ट्रेंथ एटा मोर वीकनेस एमती भाव जो डिस्कस करेंगे और तार वीकनेस ता स्ट्रेंथ को कौन करेंगे ना मोडल्ड करेंगे अर्थात मोडिफिकेशन करेंगे। पॉजिटिवटा स्ट्रेंथन हम नेगेटिवटा डाउन हो जहाँफल कौन कर ना क्लाइंट हम हेल्दी इफेक्टिव सुस्थ बा स्ट्रेंथ आउ पीसफुल हो पारे से जगार। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा ये आम केतटा पॉइंट देखिले 5टा पॉइंट देखिले। फास्ट आम कौन कौ पॉइंट को देखिले ना डिफाइन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, देन फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स, देन डेवलपमेंट ऑफ इनसाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स और टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। देन लास्ट आम देखिए चेक करवा कौन कौन रहा केते सक्सेस है। देन एडवांटेजेस कौन रही। फास्ट इट हेल्प्स द काउंसिल to become independent and self-reliant and to attain the ability of a self-direction। अर्थात एठी कौन होता है ना काउंसिल अर्थात क्लाइंट कौन होता है ना इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ रिलिएंट होता है। इंडिपेंडेंस मीन्स तो समस्त एक्सप्रेशन को शेयर करें। सेल्फ रिलिएंट मीन्स से कौन करें जेको समय जेको इमोशन ता भीतर अच्छी कहीपे। अटेंड एंड टू अटेन द एबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। मो भीतर कौन सेल्फ डायरेक्शन रही, मो भीतर कौन स्ट्रेंथ वीकनेस जानवर सुजोग पाई था किए ना क्लाइंट। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू अटेन इमोशनल इंटीग्रिटी एंड हेल्प्स टू रीच हिज फुल ग्रोथ। ये कौन होता है क्लाइंट कौन करता है ना अटेंड करता है। एठी बहुत क्लाइंट और काउंसिलर इंडिपेंडेंस थांती, सेल्फ रिलायंट थांती, सेल्फ डायरेक्शन थांती एवं क्लाइंट कौन करता है तार इमोशनल इंटीग्रिटी बजाय रखी था जहाँफल दी जण भल भाव में काउंसलिंग प्रोसेस से ग्रोथ रे रनिंग करि पारंती। ओके इट हेल्प्स टू अटेंड मोर सस्टेनेबल एडजस्टमेंट टू हिज एंड हर प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस। सस्टेनेबल मीन्स यही सिचुएशन ले सस्टेनेबल एडजस्टमेंट कौन आम बुझा प्रथम सस्टेनेबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल एडजस्टमेंट। अर्थात मुझे सिचुएशन ले एपरी भाव में कली तेणु यही परिणाम भोगिली तेणु आग को यही सिचुएशन न आसू से एडजस्टमेंट करिया से एडजस्टमेंट करदेव। अर्थात मुझे गोटे नुआ एरिया से एडजस्टमेंट कर पाई ना जिते मुझे शिखिली केमी एडजस्टमेंट कर जाए एडजस्टमेंट प्रोसेस देखिली एवं यहीपर जो आगू सिचुएशन आस मो व्यवहार मो बिहेवियर को
सस्टेनेबल करदेवी अर्थात आडजस्टमेंट करने कहीदेवा दिजन कोऑपरेशन करदेवी अर्थात से सिचुएशन ए सिचुएशन को मुझे कोऑपरेट करके आडजस्टमेंट करी दिस इज सस्टेनेबल आडजस्टमेंट दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग लिव्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये कौन होता है ना ये जो काउंसलिंग प्रोसेसटा कौन होता है ना इम्प्रूवमेंट करता है कहार ना बोथ काउंसिलर आ होची काउंसिल दिजनकर कौन है इम्प्रूवमेंट होता है ये इम्प्रूवमेंट सहित कौन होता है ना इम्प्रेशन गोटे लंगर पीरियड पर्यंत चली था ठीक अच्छे डिसएडवांटेजेस कौन अच्छे देखा फास्ट डिसएडवांटेजेस इट हेल्प्स द काउंसिल टू बिकम इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंट एंड टू एडवांटेजेस हम पढ़ सारे अच्छा डिसएडवांटेजेस जीवा डिसएडवांटेजेस कौन अच्छे एडवांटेजेस देन ओके जस्ट देन डिसएडवांटेजेस कौन अच्छी हमारो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग रे बा काउंसलिंग प्रोसेस रे इट इज यूजुअली मोर टाइम कंज्यूमिंग कारण आम देखिले काउंसिलर सेंटर बा डायरेक्ट काउंसलिंग प्रोसेस रे टाइम बहुत कम खर्च होता कारण काउंसिलर डिसीजन नौला नुहे कि क्लाइंट एठी कौन क्लाइंट डिसीजन नब क्लाइंट रियलाइज कर जन को रियलाइज करवा डिसीजन मेकिंग करवा एत सहज कथा नुहे इट इज नॉट इजी वे टू टेक टाइम to realize his problem, his and her abilities to solve and take the decision. Okay, then second, it is not suitable for a less mature and less intellect counsel. अर्थात ये जिते लेस मैच्योर हो लेस इंटेलेक्ट हो से कदापि फलप्रद हुए ना ठीक अच्छे the counselor's passive attitude might irritate the counsel or the client so much that he might hesitate to express his feeling बेले बेले कौन हुए ना जेहेतु दिवन बार ऑप्टिमम फ्रीडम अच्छी बेले बेले जिते बेले काउंसिलर टिके इरिटेट हो जाए इरिटेट एटीट्यूड नहीं आसे से कौन हुए ना क्लाइंट तार एक्सप्रेस को सेतिकी प्रेजेंट करिबारे हेजिटेट फील करे ठीक अच्छे इट इज नॉट पॉसिबल इन स्कूल बिकॉज द काउंसिलर और क्लाइंट और स्टूडेंट्स हैज टू अटेंड मेनी पीपल्स कारण ये हूँ ऑप्टिमम फ्रीडम दिया होता है तेणु यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले फलप्रद नुहे कारण से सब पिला पाखे थाए ठीक अच्छे एबे आमे कंपेयर करिबा बोथ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कौन कौन रही आमर कंपैरिजन करिबारे ठीक अच्छे फास्ट जन देखा डायरेक्टिव काउंसलिंग कौन होता है काउंसिलर सेंटर्ड होता है किंतु नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कौन होता है ना काउंसिल सेंटर्ड होता है क्लाइंट सेंटर्ड होता है ओके एथिरे कौन होता है डायरेक्टिव रे सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम बिकॉज एठी कौन होता है नॉन डायरेक्टिव रे सेल्फ एनालिसिस एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व मध्य होता है ये होता है कौन प्रॉब्लम बेस्ड किंतु नॉन डायरेक्टिव कौन होता है इंडिविजुअल इमोशन बेस्ड होता है ओके ये कौन होता है ना बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ये किंतु इमोशनल एस्पेक्ट को देखी था डायरेक्ट एंड परसुएसिव मेथड यूज्ड ठीक अच्छे परसुएसिव मेथड डायरेक्ट मेथड पूरा डायरेक्ट फोकस देता है एटी किंतु इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है किंतु एटी टाइम कंज्यूमिंग होता है हेल्प्स फ्रॉम काउंसिलर फॉर टेकिंग डिसीजन यह कौन होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग काउंसिलर को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने ये कौन क्लाइंट टेक हिज ओन डिसीजन ओके तापर देखा यूजिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल
এটি সাইকোলজিক্যাল আসেসমেন্ট টুল ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু মে নট ইউজ সাইকোলজিক্যাল আসেসমেন্ট বিকজ এটি সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে আমি ডিସିସନ୍ নেবার ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁଲ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଲା ପରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ରିୟଲାଇଜ୍ କରିବା ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଉନସିଲିଂ ଓକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଉନସିଲିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଥର୍ନ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଥର୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଚିଫ୍ advocate of this type of a counseling process by Thorne. Dietetic counseling Williamson तापर देखिले नॉन डाइट होची रोजर देन Thorne. Electric counseling is a type of a counseling process which is neither counselor centered nor client centered but a combination of both. Elective means both. ना client centered ना counselor centered दी जन सेम अर्थात दी जन को ऑप्टिमम फ्रीडम दी जन को सेम सिचुएशन दी जन को सेम सिचुएशन मीन्स ना क्लाइंट अधिक डोमिनेंस करि परिबो ना आमे कहि पारे काउंसलर अधिक डोमिनेंस करिबा दी जन समान भाव डिस्कस करिबा आ डिसीजन नेबे ठीक अछि. Here, the counselor is neither too active as in directive counseling nor too passive as in non-directive counseling, but follow a middle course. अर्थात ना आम देखिले डायरेक्टिव काउंसलिंग रे काउंसलर एक्टिव थिला क्लाइंट पैसिव थिला नॉन डायरेक्टिव रे क्लाइंट एक्टिव काउंसलर पैसिव मीन्स एते तार सेंटर आसु नथिला तेणु एठी कोन बोथ दियण सेम आउ मिडिल कोर्स रहिबे जदि हम देखिबा एटा होची एक्टिव एटा होची पैसिव तेणु दियण मिडिल ना किए एक्टिव होबनी कि नाइदर एक्टिव नॉर पैसिव ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक काउंसलिंग ओके कौन कौन सब कैरेक्टर रही इलेक्ट्रिक काउंसलिंग प्रोसेस रे. फर्स्ट methods of counseling may change from client to client or even with the same client from time to time. विभिन्न प्रकार मेथड अच्छे मेथड अच्छे काउंसलिंग करने ठीक अच्छे कौन हम ना बेले डायरेक्टिव आसपे बेले नॉन डायरेक्टिव आसपे ठीक अच्छे क्लाइंट अनुसार चेंज हम सेम क्लाइंट थाए टाइम अनुसार चेंज हो पाए बेले बेले क्लाइंट को सेंटर रखा पड़ो बेले बेले काउंसलर को सेंटर रखा पड़ो ठीक अच्छे. दिस इज इलेक्ट्रिक काउंसलिंग प्रोसेस. सेकेंड देखा इट इज हाईली फ्लेक्सिबल इन मैनर बिकॉज द क्लाइंट एंड काउंसलर मेक फ्रीली एंड फ्लेक्सिबली थिंकिंग. sometimes counselor is centered sometimes client is centered. It is a more flexible comparison to previous two counseling process. Freedom of choice expression is open to both the counselor and the counsel. both counselor और client को आमे फ्रीडम दबा और एक्सप्रेशन करिया पई ताको ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मध्य जोगै दबा. experiences of mutual confidence and faith in the relationship are basis. ए कहाँ पर बेस करेंगे म्यूचुअल कॉन्फिडेंट आउ एक्सपीरियंसेस उपरे बेस करियो. दी जन को सपोर्ट करेंगे दी जन को कॉन्फिडेंट रखिए दी जन को ट्रस्ट करेंगे तो ये गोटे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंट ट्रस्ट बिलीव कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर ओके. द क्लाइंट एंड द philosophical framework are adjusted to shape the purpose of the relationship. कौन कहूँ ये ना client and the philosophical framework जहाँ रही ता जीवन में philosophical framework are adjusted to shape the purpose of the relationship. अर्थात client रो कौन philosophical framework रही आमे कहि परिबे इलेक्ट्रिक काउंसलिंग कौन फिलोसफिकल फ्रेमवर्क रही तार हिस्ट्री तार एक्सपीरियंसेस तार इमोशन तार एबिलिटी बोथ काउंसलर आउ क्लाइंट रो आमे कौन करबा जे पर्पज रे रिलेशन को बिल्ड करबा ओके. स्टेप्स इन
इलेक्टिव काउंसलिंग स्टेप्स इन इलेक्टिव काउंसलिंग फास्ट कौन स्टेप आसो आम कहीपर डायग्नोसिस इन द कज परस्पर मध्य डिस्कस करा कोटा वीक पॉइंट कोटा स्ट्रेंथ पॉइंट आम डायग्नोसिस करवा डिस्कस करवा फास्ट स्टेप डायग्नोसिस ऑफ द कज किंतु मन पकांतु डायरेक्टिव काउंसलिंग रे 3 नंबर आसला एनालिसिस सिंथेसिस देन डायग्नोसिस किंतु इलेक्टिव काउंसलिंग कौन आसो फास्ट ऑफ आसो कौन आम आसो डायग्नोसिस ऑफ द कज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम तापर आसो एनालिसिस ठीक अच्छे एटा टिके उल्टा हो जगह फास्ट डायग्नोसिस देन एनालिसिस दैट प्रिपरेशन ऑफ अ टेंटेटिव प्लान फॉर मॉडिफाइंग फैक्टर आम कह कौन कर ना सिंथेसिस कहीपर ठीक अच्छे प्रिपरेशन ऑफ टेंटेटिव प्लान कौन कौन एनालिसिस कलापर टेंटेटिव प्लान आसला फॉर मॉडिफिकेशन फैक्टर कौन क्लाइंट कौन रही प्रॉब्लम ताको मॉडिफाई करने काउंसलर चाहिए सिक्योरिंग इफेक्टिव कंडीशन ऑफ द काउंसलिंग जिते बड़े आम सिक्योरिंग एनवायरनमेंट फिलिंग करिया सेते बेले आम कौन करवा ना काउंसलिंग प्रोवाइड करवा ठीक अच्छे तापर इंटरव्यूइंग एंड स्टिमुलेटिंग द क्लाइंट टू डेवलप हिज ओन रिसोर्सेस एंड टू एज्यूम हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्राइंग न्यू मोड ऑफ एडजस्टमेंट एठी कौन करिवो ना काउंसलर एमिति एनवायरनमेंट एमिति सिमुलेटिंग क्रिएट करिवो जते जहा कि क्लाइंट को हेल्प करिवो कौन करिया पई ना ओन रिसोर्सेस ता भीतर थिबा बुड़ी जाइथिबा एबिलिटी को पुणी रिसोर्सेस करा जिवो एज्यूम करिवो से निजर स्ट्रेंथ आ दक्षता बा एबिलिटी को कौन करिया पई ना गोटे न्यू मोड ऑफ एडजस्टमेंट बा से जो प्रॉब्लम है सेतरा एडजस्टमेंट कर जा पई बा प्रॉब्लम को सॉल्व कर जा पई ठीक अछि then proper handling of any related problem which may contribute to adjustment प्रॉपर हैंडलिंग प्रॉपर दक्षता सहित ताको कौन करेंगे ना एडजस्टमेंट करने ट्राए करेंगे एनी रिलेटेड प्रॉब्लम व्हिच मे बी कंट्रीब्यूट टू एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट करने किसी प्रॉब्लम आसी प्रॉपर्ली आम हैंडल करा उचित फास्ट डायग्नोसिस एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम प्रिपरेशन ऑफ टेंटेटिव प्लान देन सिक्योरिंग इफेक्टिव कंडीशन फॉर काउंसलिंग देन आम कह मोड ऑफ एडजस्टमेंट एंड रियलाइजिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी रिसोर्सेस प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एनी रिलेटेड प्रॉब्लम व्हिच मे बी कंट्रीब्यूट to adjustment okay then limitation of elective counseling okay कौन limitation रही हम देखा first electicism is not possible because directive and non-directive concept cannot merge together सेते बेले इलेक्टिव काउंसलिंग हम ना जिते बेले बोथ डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलर काउंसलिंग जिते बेले क्लाइंट आ काउंसलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट को नुआ से इलेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल व्हेन द काउंसलर एंड क्लाइंट टिल नॉट कोऑपरेशन टू ईच अदर इलेक्टिसिज्म इज वेग एंड सुपरफिशियल एंड आम कहीपर अपॉर्चुनिटी अर्थात एटा गोटे भावनार थिंकिंग एटा गोटे सुपरफिशियल थिंकिंग एटा गोटे अपॉर्चुनिटी सिचुएशन एमती अपॉर्चुनिटी मिले हो पार एटा प्रायतः यूज हबार आम देखी ना आम भाविबा गोटे एमती सिचुएशन आसीपे एमती एटा गोटे भेग्यू कहुए किसी लोक भेग्यू कहुए कारण जिते बड़े क्लाइंट प्रॉब्लम आणुछि काउंसिलर पाखक निहाती भाव में काउंसिलर से एक्सपीरियंस रहा दरकार आ क्लाइंट सब मोर एक्सपीरियंस नहेले इलेक्टिव काउंसलिंग इज नॉट पॉसिबल कारण दी जन डिस्कस करेंगे गोटे एक्सपीरियंस को लेकिन आउ जिते बड़े क्लाइंट आ काउंसिलर दी जन एक्सपर्टाइज थे पर्सन को लेकिन से इलेक्टिव काउंसलिंग पॉसिबल हो पारे नहीं पारे जड़े इनमेच्योर थी जड़े फुल मेच्योर जड़े फुल मेच्योर जड़े इनमेच्योर जड़े इनबालांस जड़े बालांस एटा केमी पॉसिबल हो पार डिस्कस कर एबिलिटी रखते लेकिन डिस्कस कर प्रॉम्प्ट थी तेणु इलेक्टिव काउंसलिंग इज टाइप ऑफ काउंसलिंग व्हेन द क्लाइंट एंड काउंसलर इज म्यूचुअल एक्सपीरियंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन इट इज ए सुपरफिशियल थिंकिंग ओके इट इज नॉट यूज मोस्टली इन कॉमन एरा एते पेशेंटली शुणी लास्ट को लिखाई आई थिंक दिस विल सो व्हाई डू यू थिंक सो ओके तो पेशेंटली क्लास शुणी बुझी एवं आपण मानू
समस्त को थैंक यू मो तरफ एवं क्यों क्यों क्लास दरकार एजुकेशन रिलेटेड हो पॉलिट रिलेटेड हो जोग्राफी रिलेटेड हो हिस्ट्री रिलेटेड हो कमेंट सेक्शन जनइले आम से अनुसार कंटेंट एवं लेक्चर प्रोवाइड करदेबू। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद जय भारत। ओके तो यही भाव में देखापी चैनल को मत आप सब्सक्राइब करेंगे एवं ता सहित आम कहीपर कि चैनल जड़ित बेल आइकन को दबाई पारे। जय जगन्नाथ।